बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि कंपोनेंट हमें कब यूज़ करना है, बीन हमें कब यूज़ करना है इन स्प्रिंग में। सो विल ट्राई टू डिस्कस दैट इन डिटेल। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंपोनेंट वर्सेस बीन इन स्प्रिंग। सो कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, ये एक क्लास लेवल अनोटेशन है, ठीक है। एंड बीन क्या होता है, बीन एक मेथड लेवल अनोटेशन है। बोथ आर अनोटेशन यूज्ड इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट। सो लेट्स सी हाउ दोज आर डिफरेंटली मैनेज्ड। सो कंपोनेंट एज आई मेंशन लाइक दिस इज अ क्लास लेवल अनोटेशन इन स्प्रिंग। ये क्लास लेवल अनोटेशन है जो कि स्प्रिंग को बताता है भाई ये कंपोनेंट है, इसे आपको मैनेज करना है, ठीक है। स्प्रिंग क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, रजिस्टर करेगा वाया कंपोनेंट स्कैनिंग। So we have a component scanning mechanism in Spring, so that will automatically detect all those classes जो कि component से annotated हैं, ठीक है। For example, we can have service, we can have repository, we can have controller, right? So example of component, this is a basic example, like we can annotate this component component and then public class something, okay. And what is a bean? Bean is a method level annotation, right, as I mentioned already. So इसमें क्या होता है, आपको एक method define करना होता है जो कि एक क्लास रिटर्न करेगा एंड इट इज यूज्ड इनसाइड कॉन्फ़िगरेशन क्लास, ओके। सो जो भी हमारी स्प्रिंग की कॉन्फ़िगरेशन क्लास होती है उसके अंदर हम बीन डिक्लेयर करते हैं, बीन डिफाइन करते हैं थ्रू मेथड, राइट। एंड इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर थर्ड पार्टी और कस्टम बीन इनिशियलाइजेशन। Suppose you are importing some mail API, mail library in your application. You want to use some mail and you want to use some Kafka related stuff, right? So what you need to do, just you need to define your bean, whatever class you want in your application. Then you need to define them in configuration class, right, as a method. And in that, what you can do, you can control the configuration of that class. Means you can customize your bean, okay, using that @bean annotation. For example, this is one of the example, like in configuration we have this app config and then we have this @bean my component, and my component, it is just returning a my component object, right. We can add some attributes also, we can customize this before returning this, like using builder or something, like, okay. There are some key differences that you need to be aware before implementing those or before using them in your application. So component is a class level and bean is a method level. Component is automatically detected, but bean is manually defined. You need to define them in your configuration class. Component works with component scanning. Bean provide more control, means you can control your bean creation. Bean is useful for third party or non-standard beans. When to use what? Okay, use component for standard service, repository or controller. Whatever class you are making, if you want to make them class available at the scanning time, you want to create a object for them, you can annotate them at the component, those classes, right. You can use extended version of component like @service. If you want to make them as a service, you can use @repository, you can use @controller, okay, rest controller, like these are, okay. Use bean @bean when you need more control over bean creation, okay. Bean is better for registering third party classes or complex dependencies if you want to wire something before returning the object or before creating that object. So you just need to use as a bean. Conclusion, so both component and bean help in defining beans, as we know, right. So दोनों ही तरीके से हम एक bean को define कर सकते हैं, ठीक है।